Let's start with the networking terminologies, and the first topic is network. What is a network? So अगर हम simplest form में बात करें, network is nothing more than two connected computers sharing resources with one another. जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में रिसोर्सेज शेयर करते हैं, so then it becomes a network. और अगर मैं स्पेसिफिकली करूं तो आप नेटवर्क की बात, आप कंप्यूटर ना कहकर उसको एक डिवाइस भी कह सकते हैं कि जब दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करते हैं टू शेयर रिसोर्सेज विद वन अनदर, देन इट इज कॉल्ड अ नेटवर्क. सो बेसिकली नेटवर्क is composed of two main aspects: the physical connection and the logical connection. So physical connection means the wires that connect the two devices. So वो आपका फाइबर केबल भी हो सकता है, वो आपका एथरनेट भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. So physical connection, and then we have the logical connection. Now let's discuss about the basic networking rules. The computers in a network must use the same procedures for sending and receiving data. We call these communication protocols. For example, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं एंड एक जो इंसान है वो इंग्लिश बोल रहा है, उसको सिर्फ इंग्लिश आती है. दूसरा इंसान जो है वो सिर्फ हिंदी बोल रहा है, उसको सिर्फ हिंदी आती है. दोनों अगर आपस में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, सो देयर वुड बी द कम्युनिकेशन फेलियर. कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगी क्योंकि एक को सिर्फ इंग्लिश आती है, दूसरे को सिर्फ हिंदी आती है. सो कम्युनिकेशन होने के लिए दोनों या तो सेम लैंग्वेज में बात करें और वो एक ट्रांसलेटर को हायर करें. सो उसी तरीके से द कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क मस्ट यूज द सेम प्रोसीजर्स फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा. तो किसी भी नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर्स होते हैं, तो उनको कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए सेम प्रोसीजर्स यूज करने पड़ेंगे फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा. और इन प्रोसीजर्स को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स. द सेकंड थिंग इज द डेटा मस्ट बी डिलीवर्ड अनकरप्टेड. इफ इट इज करप्टेड, इट्स यूजलेस. डेटा करप्टेड नहीं होना चाहिए. सेंडर ने डेटा सेंड किया रिसीवर को और रिसीवर के पास वो डेटा नहीं पहुंचा, सो इट्स यूजलेस, क्योंकि सेंडर ने अपना काम कर दिया. सेंडर को डेटा सेंड करना उसने कर दिया, लेकिन रिसीवर को रिसीव नहीं हुआ. सो इन दिस केस कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं है. सो द डेटा शुड बी अनकरप्टेड एंड वो डिलीवर्ड होना चाहिए फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. Computers in a network must be capable of determining the origin and destination of a piece of information. जब भी किसी दो कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है, तो दोनों को एक दूसरे का origin और destination पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर A is sending some data to computer B. Computer is sending some data to computer B. So computer A should know the IP and MAC address of computer B. In the same way, computer B should know the IP and MAC address of the computer A. So किसी भी नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस होते हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं, उन्हें एक दूसरे का IP और MAC एड्रेस पता होना चाहिए टू एस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन. Computer networking protocols. So computers communicate with each other with network protocols. For example, there are two computers, computers A and computer B. कंप्यूटर ए कोई ईमेल फाइल सेंड कर रहा है कंप्यूटर बी को, एंड कंप्यूटर बी इज सेंडिंग सम जर्नल, या आप कह सकते हैं कि वर्ड फाइल, टू कंप्यूटर ए. सो कंप्यूटर ए जो ईमेल सेंड कर रहा है कंप्यूटर बी को, सो द कंप्यूटर ए मस्ट बी फॉलोइंग ईमेल प्रोटोकॉल्स. सो जब भी दो कंप्यूटर आपस में बात करते हैं, ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होती है या वो डेटा ट्रांसफर करते हैं, सो दे शुड बी सम प्रोटोकॉल. अगर ईमेल सेंड कर रहे हैं, सो दे शुड बी सम ईमेल प्रोटोकॉल्स. अगर कोई फाइल कर रहे हैं सेंड, तो फाइल प्रोटोकॉल होने चाहिए. सो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, सो बेसिकली प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स गवर्निंग हाउ मशीन्स एक्सचेंज डेटा एंड एनेबल इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सो प्रोटोकॉल्स रूल्स होते हैं जो गवर्न करते हैं कि मशीन्स, जो कंप्यूटर्स होते हैं, डिवाइस होते हैं, वो आपस में कैसे डेटा एक्सचेंज करें, सो दैट देयर इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन.
सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स फ्रॉम सम एवरीडे एग्जांपल. जैसे पुराने ज़माने में लैंडलाइन यूज़ होते थे. सो अगर आपका लैंडलाइन पे आपने फ़ोन उठाया और आपको किसी को कॉल करना है, सो डायलर टोन होनी चाहिए. अगर डायलर टोन नहीं आती, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ गैप है, कुछ ना कुछ, या तो हमारा लैंडलाइन खराब है, या हमारा जो जो हमारा फिजिकल कनेक्शन है वायर, उसमें कुछ कमी है, इसलिए हमें डायलर टोन नहीं आ रही. सो इट वाज अ प्रोटोकॉल कि जब भी आप फोन लैंडलाइन आप पिक करें और डायलर टोन हो, तभी आप नंबर डायल करें. अगर आप बिना डायलर टोन सुने नंबर डायल करेंगे, सो वहां पे फिर आपका नंबर लगेगा ही नहीं, आप किसी को कॉल ही नहीं लगा पाएंगे. सो इट वाज अ प्रोटोकॉल कि जब भी आप किसी को कॉल लगाना चाहें तो पहले चेक कर लें कि वहां पे डायलर टोन आ रही है कि नहीं आ रही है. और यू कैन टेक एन एग्जाम्पल कि व्हेन यू ड्राइव योर कार, यू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड. रेड लाइट आनी है तो रुकना है, ग्रीन लाइट आनी है तो चलना है, येलो आ रही है तो वेट करना है. तो ये क्या है, ये आपके रूल्स हैं टू ड्राइव योर कार ओवर द रोड. सो ऐसे कंप्यूटर्स के बीच में भी रूल्स होते हैं कि जब भी उनको कोई डेटा एक्सचेंज करना होता है, सो दे मस्ट फॉलो सम protocols or rules in order to exchange data effectively. Now here comes the OSI model, the most important topic of networking, OSI and TCP/IP. आप जब भी इंटरव्यू में अटेंड करेंगे, आप बैठेंगे, so like high chances are there कि interviewer will be asking the OSI model. So if we go by the definition and the full form, so OSI stands for Open System Interconnection Reference Model. इसमें से आपका एक क्वेश्चन भी बन जाता है इंटरव्यू का कि हाउ कम ओएसआई मॉडल इज ए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. सो इसका आंसर ये है कि ये आज तक कभी इंप्लीमेंट हुआ नहीं है. द पर्पस ऑफ ओएसआई मॉडल इज टू गिव अस अ गाइड टू अंडरस्टैंड हाउ नेटवर्क्स ऑपरेट. सो ये कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क शोइंग अस हाउ डेटा मूव्स थ्रू आउट अ नेटवर्क. जब भी कोई दो डिवाइसेस आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, सो ओएसआई मॉडल हमें ये दिखाता है कि वो डेटा कैसे मूव होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. सो दे आर लाइक सेवरल लेयर्स इन द ओएसआई मॉडल. सो जैसे कि मैंने बोला कि एक क्वेश्चन ये बन सकता है, और ये पूछते भी कि हाउ कम कि ओएसआई मॉडल इज अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. सो द आंसर इज कि इट हैज नेवर बीन इम्प्लीमेंटेड. It's only a reference model. So as you can read over here, was not implemented in the real world. TCP/IP implement हुआ है, लेकिन OSI model is never implemented in the real world. So OSI model has several layers, and it is divided into upper layers जिनको हम host layers भी बोलते हैं, and the lower layers जिनको हम media layers बोलते हैं. So OSI model breaks down the complex task of computer to computer network communication into 7 layers. So OSI model के अंदर 7 layers होती हैं, which breaks down the complex tasks of computer to computer network communication. So upper layer is also known as host layer, and the lower layer is known as the media layers, which is used, or we can say, which provide the network specific functions such as routing, addressing, and flow control, which we will discuss in detail uh, in another session. So this is how OSI model looks. It has 7 layers. The upper layers and the lower layers, host layers. Host layer has the application layer, presentation layer, session layer, transport layer, and the media layers has network layer, data link layer, physical layer. The upper layer, the application layer is the layer 7, and the bottom layer, physical layer, is the 1. Then second layer is data link, then it has network layer, which is third layer, then we have 4, 5, and the 6. So starting from 1 to 7, we have 7 layers in the OSI model. इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं. प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे. So the first letter P stands for physical layer, D stands for data link, N stands for network layer, T stands for transport layer, S stands for session layer, P stands for presentation layer, and the A stands for application layer. So इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है कि
which is the fourth layer of the OSI model. So the fourth layer is transport layer. तो अगर आप याद रख पाएंगे, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे. सो इससे आपको आसानी होगी सारे लेयर्स के नाम याद रखने में. Physical layer is involved with the media signal and binary transmission. So basically जब वायर के बीच में जब ट्रांसमिशन होता है तो वो आता है फिजिकल लेयर के अंदर. देन वी हैव डेटा लिंक लेयर. So it has the MAC and the physical addressing. Then we have the network layer, the IP addresses. It deals with the IP addresses. Transport layer, it deals with the end-to-end connection and reliability. Session layer, interhost communication. Presentation layer, we have for data representation and encryption. And then the seventh layer, application layer, it is the network process to application. So you have to memorize the 7 layers of OSI model, and you can memorize this with the help of this shortcut. Please do not throw sausage pizza away, where you can see key P stands for physical, D for data link, and in the same way A for application layer. So remember this. Please do not throw sausage pizza away shortcut to memorize all the 7 layers of the OSI model. Now let's assume computer A wants to exchange some data or wants to establish the communication with computer B. So the data will flow from application layer to presentation layer to session layer, then transport network data link from top to down in network A, because from computer A, because computer A is the sender. So the data will flow from application layer to physical layer. Now the data is to be received by computer B. So computer B में the data will flow from physical layer to application layer. From physical layer to application layer, from bottom to upwards. सेंटर में एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर में गया, फिजिकल लेयर से फिर ट्रांसफर हुआ कंप्यूटर बी के फिजिकल लेयर में, एंड देन इट विल मूव टू द एप्लीकेशन लेयर. In this way, the data flows, and two computers or devices try to establish communication and exchange data. So the data will flow from application layer to physical layer in the sender, and in the receiver it will flow from physical layer to the application layer. So remember this thing. Now after OSI model there comes another important topic which is a TCP IP model. जैसे हमने OSI model के बारे में बोला था कि OSI model has 7 layers and it is a conceptual framework, but TCP IP model, it was implemented. So the TCP IP suite or the protocol is the most commonly used protocol suite in the networking world. सबसे ज़्यादा यूज होने वाला अगर कोई प्रोटोकॉल है so that is TCP IP. And as compared to OSI model, TCP IP model has 4 layers. OSI model has 7 layers. TCP IP model has 4 layers. So it is the standard for computer networking. TCP IP model is the standard for computer networking. As I said, it is based on a 4 layer model that is similar to the OSI model, developed by the United States Department of Defense in the early 1970s. In 1982, the DoD, Department of Defense, declared TCP/IP as the standard for all the military computer networking. So you have to memorize this thing. TCP/IP has 4 layers, while OSI has 7 layers. Now, if you compare the TCP/IP model to OSI model, so OSI model में जो आपका application layer थी, और एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, उन तीनों की मिला के टीसीपी/आईपी में एक ही लेयर है जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर. सो टीसीपी/आईपी में एप्लीकेशन लेयर है, और ये आप वो एप्लीकेशन लेयर आपकी 3 लेयर बन जाती हैं ओएसआई मॉडल में, विच इज एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन. ट्रांसपोर्ट लेयर इज सेम इन टीसीपी/आईपी एंड ओएसआई. नेटवर्क लेयर is also same. You call it internet layer in TCP/IP, but you can call it as network layer as well in OSI model. And data link and physical, ये दोनों मिला के हो जाता है आपका नेटवर्क इंटरफेस लेयर.
सो टीसीपी आईपी में आपकी 4 लेयर होती हैं, ओएसआई में आपकी 7 लेयर होती हैं, एंड आपको टीसीपी आईपी की 4 लेयर का नाम भी याद रखना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू में वो आपका पूछ सकता है. Now in the next session, we will be discussing about the network transmission types. Thank you so much for be in this session, and we will be covering the next topic like network transmission and other topics in the next lecture.